Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, in the earlier part we saw how to solve an assignment problem, the basic steps under HAM. Now we'll learn how to work out an assignment problem where in the step 3 the optimality test is not satisfied. Let's write an example and try to solve the problem. Now this is our second example based on Hungarian assignment method where I will solve this problem by HAM. We'll employ the basic steps. We have got the same example, 4 workers, worker 1, worker 2, worker 3, worker 4 and 4 machines M1, M2, M3, M4. I have changed the numbers a bit just to understand the second part of the method. Our first step will be, problem should be of minimization, and second step the problem should be balance. So since we are given the cost per unit, this is a minimization problem, and my number of rows, 4 workers matlab 4 rows and 4 machines matlab 4 columns. That means my number of rows and number of columns are equal. So my number of workers and my number of machines are equal, and therefore I will say that my problem is balanced. Now the first step, as we did earlier in the previous problem, will be row minima, and the second step will be column minima. Let's apply first row minima and then column minima. In the first row my lowest number is 5, so I will subtract all the numbers from in the first row from 5. So it will be 10 minus 5, 12 minus 5, 8 minus 5 and 5 minus 5. In the second row my lowest number is 7, so it will be 10 minus 7, 8 minus 7, 12 minus 7 and 7 minus 7. In the third row my lowest number is 5, so 12 minus 5, 10 minus 5, 8 minus 5 and 5 minus 5, and in the last row it will be 10 minus 5, 10 minus 5, 8 minus 5 and 5 minus 5. So we obtain a new table by using row minima. अब row minima वाला table इसके हम लोग find out करेंगे column minima. First column, my lowest number is 3. So I'll subtract 3 from all the numbers. So 5 minus 3, 3 minus 3, 7 minus 3 and 5 minus 3. Second column, my lowest number is 1. So it will be 7 minus 1, 1 minus 1, 5 minus 1 and 5 minus 1. In the third column, it will be lowest number will be 3. So 3 minus 3, 5 minus 3, 3 minus 3 and 3 minus 3. And in the last column we already have a 0, so it will be always the same. After doing row minima and column minima, my step 3 will be to check the optimality of the solution. For that we need to redraw the diagram obtained or the table obtained after column minima. As discussed in the previous problem or the first problem,
ऑप्टिमलिटी टेस्ट में हम लोग ड्रॉ करते हैं वर्टिकल लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस, नो डायगोनल लाइंस, और कम से कम लाइंस में सब जीरोस कवर होना चाहिए. दिस इज द ओनली चैलेंजिंग स्टेप अंडर असाइनमेंट इन द होल हैम मेथड. हम इस स्टेप को अप्लाई करने से पहले हमेशा जीरोस का पोजीशन देखेंगे और हर लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरोस कवर हो जाए इस चीज की कोशिश करेंगे. विल ट्राई टू कवर all the zeros in minimum number of lines. So while drawing each and every line, you need to work out, you need to see that you are covering maximum zeros in one single line. If you look at the position of the zeros, I have got 3 zeros in the second row. मेरे पास सेकंड रो में 1 2 3 जीरोस है. मेरे पास लास्ट कॉलम में 4 जीरोस है, सेकंड लास्ट कॉलम में 3 जीरोस है. मैं सबसे पहले 4 जीरोस को एक ही लाइन में कवर कर लूंगा. सी मेरा फर्स्ट लाइन. फिर सेकंड लास्ट कॉलम में मेरे पास फिर से 3 जीरोस कवर होता है. ये मेरा सेकंड लाइन. नाउ द थर्ड लाइन आई नीड टू ड्रॉ will be to cover all the zeros. See, I can draw a line vertical under the first column and the second column. अगर मैं दो लाइंस ऐसा ड्रॉ करूंगा तो मेरा टोटल लाइंस हो जाएगा 1 2 3 4. बट देन दैट वोंट बी द ऑप्टिमल वे. हमारा ऑप्टिमलिटी टेस्ट क्या कहता है कि आपको कम से कम लाइंस में सब जीरोस कवर करना है. इसलिए मैं ये दो जीरोस एक साथ कवर करने के लिए I will draw the horizontal line. By drawing a horizontal line, I ensure that I cover all the zeros in how many lines? Only 3 lines. That way, I am checking the optimality. You have to always remember that if I draw the lines and I cover all the zeros in 4 lines, and you take 5 lines, so my solution is right rather than yours. मुझे 3 लाइंस लगता है, आपको 4 लाइंस लगता है, तो आपका गलत है सॉल्यूशन और मेरा सही है. That is how it will be worked out. Now let's see what can be done in this case. I will first note down my number of lines to cover all the zeros is 3, whereas my number of rows and columns is equal to 4. That means this table or this step won't give me the optimal solution. Therefore, the solution is not optimal. Now what can be done to improve this solution? ये जो टेबल है इसको मैं कैसे improve करूं so that I obtain a new table which will give me the best solution. Let's see. Now if you look at the table in the step 3, we have got numbers of 3 types. एक वो numbers है जिन पे line है ही नहीं. So I got 2 6 4 4 2 4. इन numbers पे lines नहीं है. Then I got numbers जिन पे डबल लाइन है. डबल लाइन मतलब इंटरसेक्शन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल this 2 and this 0, they are the numbers where there is a double line. यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस है. And then we have got the numbers with a single line. 0 0 0 0 0 0, ये 0 और ये 0, इनके ऊपर सिंगल लाइन है. आपको करना क्या है? सिलेक्ट द लोवेस्ट अमंग द नंबर्स जिनके ऊपर लाइन नहीं है, उन्हें हम कहेंगे अनकवर्ड एलिमेंट्स. So we selected the lowest value among the uncovered elements. By uncovered elements I means those numbers जिनके ऊपर कोई भी लाइन नहीं है. So मेरे पास है 2 6 4 4 4 and 2. इनमें सबसे छोटा नंबर है 4. ये 4 आपको अनकवर्ड एलिमेंट्स में से ये 2 आपको अनकवर्ड एलिमेंट्स में से माइनस करना है. So this 2 which is the lowest among the uncovered
will be subtracted from the uncovered elements, और जहां पे डबल लाइन है फॉर एग्जांपल 2 and 0, यहां पे वो 2 ऐड हो जाएगा। तो सिलेक्ट द लोवेस्ट वैल्यू अमंग द अनकोड एलिमेंट्स, इस केस में हमारा लोवेस्ट वैल्यू है 2, सब्सट्रैक्ट द लोवेस्ट वैल्यू among all uncovered elements. So uncovered elements में 2 minus 2 it will be 0, 6 minus 2 it will be 4, 4 minus 2 it will be 2, 4 minus 2 it will be 2, 2 minus 2 it will be 0 and 4 minus 2 it will be 2। जहां पे डबल इंटरसेक्शन होता है लाइंस का at 2 and 0 इंटरसेक्शन हो रहा है अंडर द सेकेंड रो, ये दो लोकेशंस ऐसा है जहां पे आपके लाइंस का इंटरसेक्शन हो रहा है, हम यहां पे वो लोवेस्ट वैल्यू ऐड करेंगे। सो इट विल बी 2 plus 2 4 and 0 plus 2 2। जो सिंगल लाइन वाला एलिमेंट्स है, जो नंबर्स पे एक ही लाइन है, दे विल रिमेन अनचेंज्ड। So elements like 0 and 0 in the first row they will remain unchanged, उनके ऊपर एक ही लाइन था। ये 0 सेकेंड रो में सेम रहेंगे, इनके ऊपर एक ही लाइन था। अगेन थर्ड रो में और फोर्थ रो के जो जीरोस है जिनके ऊपर एक ही लाइन था, they will remain same. So after doing these modifications or changes, what we are trying to do, we are trying to improve the solution. अब क्या करना है, वही करना जो पहले किया था। Apply the same optimality test and check whether this new table will give me the optimal solution or not. तो करना क्या है, फिर से वही draw the lines vertical, horizontal. Condition is minimum number of lines to cover all the zeros. कम से कम लाइंस में सभी जीरोस कवर हो जाना चाहिए। अगेन लुक एट द पोजीशन ऑफ द जीरोस। हमारे पास जीरोस है, लास्ट रो में 3 जीरोस है, लास्ट कॉलम में 3 जीरोस है, फर्स्ट कॉलम में 3 जीरोस है, सेकेंड लास्ट कॉलम में 3 जीरोस है। सो आई कैन डू दिस वे, आई कैन जस्ट गो फॉर दिस 3 जीरोस एट ए टाइम। ये 3 जीरो साथ में ले लिया और ये 3 जीरो साथ में ले लिया, बचा एक ही जीरो। अब इसको आप वर्टिकल ले लो या हॉरिजॉन्टल ले लो, आपकी मर्जी। So let's take this horizontal. So how many lines I took? I took 4 lines. So friends, since my number of lines are exactly equal to the number of rows and columns, that is 4, I can be absolutely sure that this table will give me the best solution. This table will give me the optimal solution. So what I need to do now, I will redraw the whole table again that we have obtained now and we'll go for the actual assignment. Let's see. Now we'll start with the assignment. I will go row wise first. एक जीरो होगा तो असाइनमेंट करना है। अगर एक से ज्यादा जीरो आया, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम देयर वर ओनली 1 जीरो इन ईच ऑफ द रो, अब ऐसा नहीं है, अब मेरा ईच रो में देयर आर मोर देन 1 zeros. So how to make the assignment? Let's see. In the first row I have got 3 zeros, so there is a tie for worker 1 at machine 1, machine 3 and machine 4. सेम वे वर्कर 2 का भी 2 zeros आ रहा है, मतलब हम लोग असाइनमेंट नहीं कर सकते। वर्कर 3 का फिर से 2 zeros आ रहा है, मतलब देयर इज अ टाई बिटवीन मशीन 3 एंड मशीन 4,
डोंट मेक द असाइनमेंट। वर्कर 4 का 1 2 एंड 3 तीन जीरोस आ रहा है, अगेन डोंट मेक द असाइनमेंट। सो वी वेंट रो वाइज। अब हम कॉलम वाइज जाएंगे। फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 जीरोस, अगेन देयर इज अ टाई, आई वोंट मेक द असाइनमेंट। सेकेंड रो में देयर इज ओनली 1 जीरो, असाइनमेंट कर दो। सो वर्कर 2 को मशीन 2 हमने दे दिया। एक बार सेकेंड कॉलम में हमने असाइनमेंट कर दिया तो उस करस्पॉन्डिंग रो के बाकी जीरोस कैंसिल कर दो। देन गो फॉर द थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में आई गॉट अगेन 3 जीरोस। फोर्थ कॉलम में अगेन आई गॉट 3 जीरोस, मींस देयर इज अ टाई। हम लोग रो वाइज गए थे, रो वाइज असाइनमेंट नहीं हुआ बिकॉज देयर वर मोर देन 1 जीरोस। हम कॉलम वाइज गए, कॉलम वाइज हमको सेकंड कॉलम में 1 जीरो मिला, हमने वहां पे असाइनमेंट कर दिया। अब हम फिर से रो वाइज जाएंगे। फर्स्ट रो में अभी 3 जीरोस है, तो मैं तीनों में से कोई तो 1 जीरो का असाइन कर दूंगा। लेट अस से आई मेक द असाइनमेंट इन द फर्स्ट जीरो। अगर मैंने फर्स्ट जीरो का असाइनमेंट किया तो उस करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के बाकी सब जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। तो इस फर्स्ट रो में बाकी सब जीरोस कैंसिल कर दो और फर्स्ट कॉलम में बाकी सब जीरोस कैंसिल कर दो। अब बचा मेरे पास थर्ड रो। अगेन इन द थर्ड रो आई हैव गॉट 2 zeros and fourth row again I have got 2 zeros. Again you can do simply one thing, you can select any one of the zeros. मैं थर्ड रो में पहला वाला जीरो लेता हूं। अगर मैंने पहले वाला जीरो लिया थर्ड रो में तो मेरा करस्पॉन्डिंग उस कॉलम का और उस रो का बाकी सब जीरोस क्या हो जाएगा, कैंसिल। एंड नाउ आफ्टर दिस आई एम रिमेनिंग विद ओनली 1 zero in the fourth row. So we have 4 assignments or 4 boxes or 4 squares against the zeros. हमारे वर्कर्स भी 4 थे, हमारे मशीन्स भी 4 थे, हमारे असाइनमेंट भी 4 हुए, मतलब सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। Now what is the solution? Let's obtain the solution. We have assigned worker 1 with the first column, that is machine 1, worker 2 with the second column, that is machine 2, worker 3 with the third column, that is machine 3, and worker 4 with machine 4. So worker 1 को machine 1, worker 2 को machine 2, worker 3 को machine 3 and worker 4 को machine 4. This is purely coincidence. जरूरी नहीं कि हर एक सम में ऐसा होगा कि उसी ऑर्डर में मशीन्स एलोकेट होगा या असाइन होगा जिस ऑर्डर में मशीन्स दिए गए हैं। Now what is the cost associated? Let's look at the original question. Now this is my original question. So here we have worker 1 machine 1, worker 2 machine 2, worker 3 machine 3 and worker 4 machine 4. 10 8 8 5. 10 8 8 5, which comes to 15 and 16, 31 will be my total cost. So this was the second problem जहाँ पे हमने सीखा how to improve and make the solution optimal if under step 3 the table fails the optimality test. I hope you got the point that drawing the lines is the most crucial part of any assignment problem, and that is the only challenge as a student you will face while solving the problem. Let's hope you are getting the points. Thanks for watching this video. Do subscribe to our channel Ekeeda.